Good morning to all. In the previous lab session, we discussed about the introduction of your reverse engineering, how we can apply reverse engineering on existing product, then what are the tasks you need to carry out in this subject that we already discussed. So basically, you need to prepare the report which contain two different tasks. The first task is you need to prepare four different case studies, and the second task is you need to just go ahead and in detail and give the demo of your at least two reverse engineering tools. So in this lab, I will go ahead with the how you can just write your report regarding your task one. So I will provide you some steps so that way you can just go ahead. So as I can see the sheet, in your class, three groups are already formed and they decided some of the case studies title. Okay, fine. What about others? What issues are you facing? If you didn't write your group details and your case study titles, then I'm giving you 2 3 minutes. So you just open the sheet and write it down there. Because based on your sheet entry, whenever your presentation will be there at that time, it's based on your sheet. I will go ahead and asking the questions. Okay, so I get to know like whatever you wrote in your sheet, is it match in your presentation or not? Okay, so just write it down your group details and your case study titles within 2 minutes. Then we go ahead with the today's task. Excuse me, ma'am. Yes, Ravi. Actually, ma'am, I have not decided all four of them. I have Okay. written two of them. So, is it okay? Yeah, I need to write all four of them. You need to add all four. Like two of them are from our domain. Okay, other two from which domain? Actually, I have not decided yet, and even my partner, we need to discuss about it. So, Okay, fine, but discuss it within this particular week okay, because from your next lab session, we go ahead with your case study discussion. Okay, because I know 1 week is somewhat less time for you, so don't worry. The students who already decided that very appreciable, but that's fine. You already decided too, that's fine. Okay, we will discuss this part. Like it's, can you go ahead with this or not? Okay. okay, Excuse me, ma'am. Yes. My partner Anurag is absent in this session, but we had decided two of the topics. So if I put two topics, is it all right in this session? In this session, it is fine. When you come in the next lab session, all four case studies, introduction and overview part, you need to give me. Okay. Okay, ma'am. For this lab session, it is fine that you at least make an attempt to find the two case studies. That is fine. Okay. Okay, ma'am. Now, Yes. okay, so some of the students who didn't decide their groups and the title, so make sure you just put some efforts and finalize your four titles because from your next lab, we will go ahead with one discussion in your four case studies. Okay. Now, some of the things you need to keep in mind that I'm just showing you here when you prepare the report at that time how we will go ahead. So I'm just sharing my screen. Just a second.
Okay, so when you go ahead with any software or website or application kind of thing, at that time, these are the steps that you need to carry out to apply the reverse engineering. So first of all, you need to collect the information from your existing software application or any product. Okay. Then after you need to examine this information. Why we need to examine this information? Because if I'm telling you regarding software, अगर आप software की बात करो तो उसमें काफी सारा noisy data होता है, right? That is not useful for you in your next version. Okay, so you need to examine your information, whichever it is helpful to you or important for you. You need to just extract those information. So extract the structures from that. That is like different codes are there. So by looking to the first file, you get to know, okay, this is for this code is for the login form. This code is for the registration form. Okay, this code is for add to cart functionality or any payment related functionality. Okay, so you are extracting the structure from your code. Then after you will record the functionality. By looking to the code, you get to know, okay, this is the login form. So login is one of the functionalities. So you will record the functionalities. Then if we specifically call about software domain, then you will record the data flow also. Now, what is this data flow? So when you come in your next semester, you have this subject that is a software engineering, where you will learn regarding data flow diagram. Data flow means you already learned the DBMS, right? Yes or no? Is DBMS you already learned? Yes, Or yes, ma'am. Yes. yes? Okay. Yes, ma'am. Okay, so in that part, what you are just going at, so you just fire some queries, and based on the queries, either data are stored or maybe the fetch. So if I'm telling you one example, like if registration form is there, at that time data is stored or fetched. When you perform this registration form functionalities, at that time you need to store the data or you need to fetch the data. What is your answer? Fetch, okay. Is there any other answer? Take an example of any online shopping system. जब भी आप पहली बार रजिस्टर करते हो अपने आप को, तब आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है या फिर फैच होता है? फैच होता है. Okay. Any other answers? स्टोर. Okay, fine. Okay. So all the students make it clear there is two functionality and most of the students are confused in this part. Whenever you register for your first time, at that time your data are always stored in the database because you are a new user. Okay, so whatever the details you are providing, at that time it will store all of the data in your database. But when you do the login, at that time it will fetch the data, compare it with your input values, and then after successful login will be performed. So keep in mind, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हो, at that time आपका डेटा है वो स्टोर होता है, ना कि फैच, बिकॉज डेटाबेस में कुछ डेटा ही नहीं है, वो फैच कैसे करेगा, राइट? सो आप जब भी क्वेरी फायर करते हो तो आप ऐसी क्वेरीज करते हो लाइक इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय, ताकि आपने जो भी डेटा दिया वो टेबल में इंसर्ट हो जाए. और व्हेन यू डू द लॉगिन, एट दैट टाइम आप चेक करते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल where my ID is equals to this one and my name is equals to this one. तो अगर दोनों compare होते हैं और values आती है, then it will give you the successful one query and you need to write the code accordingly, like either redirect to the home page, or if false login is there or someone trying to attempt to log in, then you need to just show the warning. Okay, so this is called the data flow. Data flow always deal with storing the data, fetching the data, manipulating the data, right? So how
your data flow from one module to another that you need to record. From this, you get to know, okay, how and where my data is actually manipulated and stored. So specifically, this is apply for the software domain. Next one is the recording the control flow. Now, what is this? Control flow means, if I'm giving you one example, कोई भी website होती है उसमें admin panel होती है, user panel होती है. तो आपका प्रिविलेज कितना, मतलब एडमिन के पास कुछ ज्यादा प्रिविलेज होता है, नॉर्मल यूजर के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता है, राइट? सो which privilege is given to which person, that is called the control of your module, and how this control flow from one module to another. For example, if you are requesting something, then admin will approve it, and then after it will always display in your users account. कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसके अप्रूवल चाहिए और उसके बाद ही वो वेबसाइट पे दिखेगा, राइट? सो इट इज कॉल्ड द recording of the control flow. So you need to identify and fetch the things regarding control flow. Next, extract the design from your entire code, and last one is the generate the documentation. Now these are the different steps for the reverse engineering. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपके पास कोड था, उसके बेस पे आपने फंक्शनलिटी रिकॉर्ड कर दी, डिजाइन एक्सट्रैक्ट कर दिया, एंड उसका एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग. But in our case study, what we are doing, that I'm writing here, now the students who didn't have any idea how to select this one, so basically two approaches are there. The first approach, you can go ahead with any ready-made case study that you will find everywhere, but it will not explore your knowledge more. Okay, you can read some research paper, and that way lots of case study you can carry it out. Another is you can make your own case study where you can apply the reverse engineering. So in that, I provide one platform, that is a kickstarter.com. So you can use that one. Or the third option, or the second is, again, you can make your case study where reverse engineering is applied. Now if you are going ahead with this part, so you don't have to worry about it, but something that you need to write it down, because अगर ready-made case study लोगे तो उसमें वो paragraph के form में लिखा होगा. You need to put some images, you need to just find out the benefits of it. So how you will write in your report? आपके जो case study है, each and every case study, उसमें आपको क्या लिखना होगा? So if I'm talking about other domain, generally क्या होता है, product based होता है, and software based भी आपकी case study हो सकती है. Product based means car or whatever the other case study are. Okay, just a second. This one is product based. Okay, this one is software based. OS regarding the, again, mechanical parts are the product based. Okay, this one is product based, but this one is the software based. Okay. So based on that case study, you need to write the following details. So if your case study is from other domain, like mechanical or other domain, and it is product based, then what you need to write it down. So first of all, we are applying here the reverse engineering, so we need to go ahead with the reverse way. So what we will do here, so first of all, you need to analyze your existing system, okay, or existing product. Now in this part, what you will write it down, you will write it down about the working principle. अगर आप कोई ऑटोमोबाइल या कोई डिवाइस लेते हो तो उसमें वर्किंग प्रिंसिपल्स है, प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज होता है, material used into that. Okay, some parts you can omit it. So these are the different things you can write it down when you analyze your existing product, and put images here. Okay, you need to put the images of your existing product. After analyzing your existing product, right now we are just going ahead with the product based case study. Okay, when we go ahead with the software based, some other scenario is there. So after analyzing your existing product, you need to write it down about the challenges or the issues this particular
existing product have. Okay, so issues and the challenges by existing product. Then after, you need to refine your requirements. Refine your requirement means either you are adding something like new features you are adding, or you are improving the functionalities. Okay, so by analyzing your existing product, you get to know about the features and the functionality. So you will record it, features and functionality. So whatever the existing products, features and functionalities are there, you need to first write them. And afterwards, what modification you will do and what kind of other functionality you want to add here, that you need to explain it. Okay. Is there any doubts up to here? Everybody with me? Yes or no? No, ma'am, no doubt. Okay, what about others? In your class, specifically in this batch, if I'm just observing, then very like 5 to 6 people are quite interactive. Other students are not that much interactive. Why? It's not a subject where you need to just go ahead with listening the things. No, you need to raise your doubt. And to raising your doubt, first you need to go ahead with the actual research, like what kind of case study you can choose. After that, you will have different doubts. Okay, fine. So up to here, these are the steps is called the reverse engineering. Okay, ये आपके 3 जो steps है, that is called the reverse engineering. यहाँ पे आपका reverse engineering खत्म हो जाता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, forward engineering apply करते हैं and पूरा एक product है वो improve way में build करते हैं, right? So here now onwards you need to write it down about your improved version. Okay, so here you need to put your images of your improved version, because अगर आप केस स्टडी में इतना ही लोगे तो इट विल नॉट दैट मच बेनिफिट. आपने तो सिर्फ क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, बट उसके बाद क्यों किया, तो उसके लिए आपको इम्प्रूव वर्जन बनाने की जरूरत पड़ेगी. इफ यू आर यूजिंग द kickstarter.com, then you will find improved version images, improved version benefits, their working principle, all those story you can read that. So it is one kind of advantage you have. I'm not saying that you can use only this platform, but other platform also you can use it. Okay, so here you need to write it down about the improved version material used in that, working principle of the new version. And then after, when this particular product is launched into the market, then what are the benefits of improved version? So if you are going ahead with a product-based case study, you need to add this kind of details. And this 3 steps is called your reverse engineering. These steps you are following as a reverse engineering, okay? तो आप ये बता सकते हो, अगर कोई पूछे कि आपकी प्रोडक्ट में, आपकी केस स्टडी में रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे अप्लाई हुआ, तो आपने पहले क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनालाइज किया, जो भी इश्यूज और चैलेंजेस थे वो आपने नोट डाउन किए, उसके बाद रिक्वायरमेंट फैच की उसमें से. यहाँ पे डिजाइन आप फैच कर सकते हो, दैट्स फाइन, उसके लिए तो हम इमेजेस रखते हैं ना, तो वो डिजाइन भी फैच हो गई. यहाँ पे आपका रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा जो टास्क था वो कंप्लीट होगा. ये दोनों चीज है, दैट इज यू अप्लाइंग अ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. एंड व्हेन यू कंबाइन दिस टू, एट दैट टाइम your entire product is re-engineered. Okay, so these things you need to write it down when you write your case study for your product base. Now I'm going ahead with the software base. Like if you are taking the case study of website, like if you are applying the reverse engineering on website, or if you are applying reverse engineering on any software or any application, then at that time you need to write this one. Okay. So the first thing is you need to examine your code or existing
software or application or website. Okay. So you need to examine. You already have the code for it. Okay, you need to examine. So if you want to re-engineer your website, so what you can do in previous semester, if you create your website, just take that website and improve it. Okay, apply reverse engineering in that and improve it. Fine. Then after analyzing your code, you will get to know about the features and the functionality of your existing. Now some students have a doubt here, like you already know the functions and features, but real time में ऐसा नहीं होता है. आपके पास एक exe फाइल होती है, okay, and when you just open the code तो आपको ये पता नहीं होगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कोड और सारी फाइलें आपको देखनी पड़ेगी. उसके बाद पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है. As of now, for your simplicity, you are taking the website which you already created in your previous semester. But ऐसा हर एक टाइम पे जरूरी नहीं होता. कंपनीज में क्या होता है, आपके पास एक exe फाइल दी गई है, उसको पूरा का पूरा एनालाइज करना है और उसके बेस पे आपको डिजाइन एक्सट्रैक्ट करना है या फिर रिक्वायरमेंट्स एंड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी एक्सट्रैक्ट करनी है. ओके, सो दैट वे यू नीड टू थिंक. अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास तो सब कुछ पड़ा है, आपको सब पता है, बट इन रियल कंपनीज this kind of things are not there. After analyzing your code and getting the features and functionality, you need to write it down about the drawbacks. Okay, so drawbacks of the existing software application and website. Then after again refine the requirements कि आपकी जो website है उसको आप कैसे improve करोगे, कौन सी functionality add करोगे यहाँ पे. So that is the refinement of your requirement, where you can write it down about added functionalities or improved functionality. Okay, जैसे कि आपने security already है but उसको ज़्यादा secure way में आपने improve किया, so that one is your improved functionality. Then after you need, after the entire refinement of your requirements, you need to go ahead with the improved version. तो आपको कोडिंग में चेंजेस करना होगा और जो भी कोडिंग में चेंज करने के बाद जो भी आपकी एंड प्रोडक्ट हुई, which is in the improved form, you need to attach the screenshot of your improved website, software, or last one is when this particular website software launch, what kind of benefits are there. Like in Play Store, we have a what's new. Like whenever new version is coming at that time, what's new in this particular version, that is written. So that way, you can go ahead with the both kind of case study. Now raise your doubt because you need to write regarding your case study. So any doubts if you have, then just raise it right now. You just take the screenshot. I'm just pasting the steps here also for your future reference. Ma'am? Yes. I mean, the software version, it would be better if we work on our own made website because we know it. Because if we work on any other software application, then Yes, it yes. would be difficult because the coding will be very large for it, right? Yes, that's why I told you na, that we have a like sufficient, not that much sufficient time, right? You need to complete it within 20 days. Okay, तो मैंने पहले ही बताया था ना लास्ट लैब में कि आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में बना दी है वही ले लो और उसको इम्प्रूव करो, उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करो, उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स अप्लाई करो, एक बार ट्राई करो. आपके पास कोड है तो आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको एनालाइज करने में टाइम नहीं जाएगा. अदरवाइज अगर कोई रैंडमली फैच करोगे कोई प्रोजेक्ट तो कोड बहुत ही लार्ज होगा तो आपको एनालाइज करने में टाइम लगेगा. सो यू कैन टेक दैट एग्जिस्टिंग वेबसाइट, दैट्स फाइन. Ma'am, we can use templates also. Yes, you can. I discuss in your class, I don't know, but I give this example in other batches also. Like you can take the any templates and yes, आपको ये करना है कि अगर आप templates ले रहे हो तो उसका भी screenshot लेना है
लाइक जो आपने डाउनलोड किया तब, और जैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करने के बाद आपने जो इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया उसका भी स्क्रीनशॉट देना है। तो ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट्स में अगर 7-8 फाइल, लाइक टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है, एक पूरा का पूरा मतलब एक वेबसाइट टाइप का व्यू होता है, राइट? तो उसमें काफी सारे नेविगेशंस होते हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी वेबसाइट को इम्प्रूव करो, राइट? एटलीस्ट आप 5-6 फंक्शनलिटीज इम्प्रूव कर दो, या 5-6 पेजेस है उसमें एडिट करके पूरा इम्प्रूव वर्जन बना दो, उसके स्क्रीनशॉट दे दो, और जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो तब आप उसके डेमो दे दो, दैट्स फाइन। ओके, तो पूरा करना भी जरूरत नहीं है, इट्स योर कैपेबिलिटी। मैंने बोला ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक कंसेप्ट है, वो आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको याद रखना है। ओके, एक बार आपको ये पता चल गया तो आपको काफी इससे बेनिफिट्स होगा, नॉट ओनली इन दिस डोमेन बट इन अदर डोमेन वेरेवर यू गो। सो that way you can go for it, that's fine, you can take the templates and all, but अगर template ले रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखना, आपकी जो टेम्पलेट का जिस बेस पे हो उस बेस पे, लाइक ऐसा लिखना कि रिवर्स इंजीनियरिंग केस स्टडी बेस्ड ऑन टेम्पलेट नेम एंड आफ्टर टेम्पलेट, ओके, दैट्स फाइन। एनी मैम उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ अ Yes. टेम्पलेट इनटू वेबसाइट। कैन यू रिपीट? मैम उसमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ अ टेम्पलेट टू अ न्यू वेबसाइट। हाँ, लिख सकते हो, इट्स फाइन। ओके ये जो शीट है वो मेरे रेफरेंस के लिए है, ताकि जब भी आपका प्रेजेंटेशन होगा तो मैं इस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, राइट? So that's why you can just write the title properly. Okay, that's fine. And ma'am, these Yes. case studies based on software, we have to only choose one on the base of software, right? Yes, yes. Rest three At will be le- hardware. Yes, you can either, it's your approach, it's your call. If you want to go ahead with the 4 different case studies on the software base, that is fine. But ऐसा मत करना कि 4 अलग-अलग टेम्पलेट ले लिया और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई किया। नो, इट्स लाइक मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम चारों की चारों ले सकते हो, दैट्स फाइन। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 है वो अदर डोमेन की ही होनी चाहिए। आप 2 अपने डोमेन की ले लो, 2 दूसरे डोमेन की ले लो, या फिर चारों की चारों अपने डोमेन से लेनी है, दैट्स फाइन। ओके, बट इट्स योर कॉल, and these are the steps that I told you, that this way you need to prepare the case study. Okay, Shakshi is saying that, ma'am, please give us the example of software related website, like this is already made, and what can we improve from use of the, okay, Shakshi, which kind of website you already built? Ma'am, I have built a PHP-based website. ओके, एंड व्हाट आर द फंक्शनैलिटी, क्योंकि आप मुझे फंक्शनैलिटी बताओगे उस बेस पे मैं आपको सजेशन कर पाऊंगी, दैट्स व्हाई। Okay, ma'am. I have made the Gmedia in the previous semester. Based on the Gmedia is like one tool by which we can advertise our product. We can make something from that software-related product as extra. Sakshi, your voice is in between breaking. Now it's audible to you or not? Yes, now it's coming fine. Go ahead. Media was basically one project in which you can advertise your project. You can make something like a Android-based project or something related to website as extra. Okay, so in your platform, anyone come and they can choose any of the language, and like ready-made code is there, or they can make their own code and then after download it. What kind of like online platform it is? Yes, it's online platform. And where the students can come to your website and they can just write the code. Yes, No, not like that. only Just ready-made give them codes. requirement that they want to, suppose they want to make online shopping project based on PHP. So by our website, they can find that ready-made project or the persons who can make their project. Okay, and do you have any like functionality to charge for them, because freely, are you giving freely everything?
Yes, most of the product was free. Okay, so you can add this one like with the code you can providing the project. Okay, as a demo you can just attach some PDF file of the project. Okay, and you can just combine this two and just charge for them because most of the students don't want to create the report also. So that thing you can add it. It's fine. Are you getting? Okay, okay, ma'am. Other suggestion also I will provide you once I will think about it. So you just message me. I will think about it and suggest more some things. Okay. Uh, Okay, ma'am. okay. Sanskar, regarding example of your report as a reference, if I'm giving you some previous year students report, then it will not benefit you because every student's case studies are totally different. Okay, and they are going ahead with the uh, entire coding part and lots of code related screenshots are there in that. But still, if you want it, then I will just upload it in the Google Classroom. But it will not. I just see all the reports. It's not that. That's why. Because everybody's case studies are different and everybody's approach are also different. That's why in this particular year, I just make this kind of format. Okay, so everybody's have some similar kind of pattern in their case studies. Next to next lab, we will start. My voice is coming to you, students. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So like next to next lab, we will start your presentation. Okay. So because in each and every group, minimum it will take 10 minutes because you need to just explain all the four case study in detail and then after a reverse engineering tools demo you need to give. Okay, so minimum it will take 10 minutes. So per lab we only go ahead with the four groups or maybe three because based on my experience this kind of situations are there. Okay, and what kind of arrangement is there, like if Shakshi's group is going ahead with the presentation, at that time I will appoint one student as a reviewer. Okay, that student also give you some suggestions regarding your presentation, either your presentation skills, either your PPT making skill, or what kind of improvement you can do. Okay, so that way we will go ahead. Ma'am, Yes. the deadline is 15th of next month, right? Yes, 15 July for report. Okay. And for presentation? But on or before we need to complete it, like your last lab in your July month is 27th. So before 27th, you need to give the Viva. Okay, ma'am. And presentation and Viva is the same or is it Yes. different? No. Whatever presentation you will give, based on that, your Viva marks will be calculated. Okay, ma'am. But you said that after 2 weeks means next to next session we will begin. But it's still 20 seconds. So we have like a month, right? 4 weeks. Some students are already ready for that. I'm not asking that you give it in the next to next lab, but some students in other batches, they are ready to give the presentation as early as possible because they are ready with that everything. So if you are ready, then it's fine. Otherwise, we go ahead with the one-on-one discussion on that. That is also good. Okay, ma'am. That Devang, regarding reverse engineering tools task, one tool demo I will give you today. After your all the doubts regarding your task one is completed, then we switch to the reverse engineering tool demo.
and lots of tools are there. But first, whatever the doubts you have regarding task 1, just raise your doubt. So we will switch, afterwards we will switch to the task 2. I will provide you some of the tools demo here. One tool I will give you in this lab session, other we will provide with the discussion on the next lab. It's not that much difficult, it's quite interesting. So I hope, how many of you are joined through the laptop? Because in your next lab, make sure you come up with the laptop, okay? So you can perform it parallelly. And one flexibility I'm giving to you, कि आपको जो task 2 है, उसमें क्या है कि 2 tools आपको explore करना है, कोई भी 2 tools, reverse engineering tools, okay? अब इसमें क्या होता है कि हर एक based on your platform, tools will be different. अगर आप .NET प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स अलग होगी, जावा पे वर्क कर रहे हो डिफरेंट होंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो डिफरेंट होंगे, राइट? सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपकी जो लैंग्वेज है उस पर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है कि एक सैंपल कोड लेना है, आपको मिल ही जाएगा, काफी सारे कोड्स आर देयर, ओके? सो यू टेक वन सैंपल कोड, उसमें क्या होता है कि जनरली एक ही फाइल होती है, right? You take the sample code, analyze it, apply the reverse engineering tool. Like if I'm giving you some example of reverse engineering tool, then note it down. Can I just, I hope you everybody take the shot if you need this. Otherwise I'm here the different reverse engineering tool. It's not like these tools are only the tools that you can apply, but companies are also using this one, and you can use any other tools also, but it should be a reverse engineering tool, okay? So that is up to you. Okay, I'm just roughing this one. Okay, so one is LSPy, which one is based on the .NET framework, okay? Then after Flexfile is there. It's also based on the .NET framework. Then after Ghidra is there. Then after strings are there. Okay. Then after Xtuzar is there. It's based on Java. Okay. IDA Pro is there, which is based on C#, C++, and all those things. Language are supported. Then after APK tool is there, which is for Android applications. Okay. Now these are the like tools. Apart from that, lots of other tools are there. You need to explore any tool. Now remember this thing. One flexibility I'm giving to you. आपको 2 tools को explore करने हैं. उसमें से एक tool है, वो जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसी में से आप कोई एक ले सकते हो, तो आपको एट द एंड सिर्फ एक टूल ही एक्सप्लोर करना होगा, ओके? सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, लाइक एक टूल है वो आप कोई भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें से ले लो. अब आपको लिखना क्या होगा, तो आपको इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना कैसे होगा, विथ स्क्रीनशॉट. सो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन विथ स्क्रीनशॉट you need to write in your task 2. कि पहले आप ये लिंक पे गए, फिर ये डाउनलोड किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर अपने एप्लीकेशन को, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं वो टूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, all the steps you need to write with the screenshot. Is it clear what you need to do in your task 2? I will give you some demo, so we will start with that part. Explain again about task 2, what we have to do. Okay, in task 2, basically you need to minimum 2 reverse engineering tools. So these are the like topmost tools. Other are also there, like Raise are there. Okay, so based on the platform you are using, some reverse engineering tools may differ. Okay, if you are using Android platform, if you are using .NET, if you are using Java, Python, different tools are there. Okay, so based on your area of interest. Okay, अगर आपको Python में interest है उसमें explore करो, अगर आपको Java में interest है उसमें explore करो. Okay, so based on your
interest, you need to explore any two tool and you need to give the demo. Okay, जैसे कि मैं आपको डेमो दूंगी, उस वे में आपको डेमो देना है. नाउ आपको दो ऐसे टूल्स एक्सप्लोर करने हैं. में से आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ कि एक टूल है वो आप मैंने जो एक्सप्लोर किया है उसमें से ले सकते हो. ओके, वही जो भी आप स्टेप, वी विल डू दिस पैरेलली. ओके, मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले ये स्टेप करो, दूसरा ये स्टेप करो. तो आप पैरेलली, अगर आपको ये टूल पसंद आए तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट मीनवाइल. ओके, तो आपका जब रिपोर्ट बने तो आप स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखो तो स्क्रीनशॉट अटैच हो जाएगा. Okay, so one tool you can take whatever I will explain, and other tool you can take any, okay, that you need to explore by your own self. Not only these are the tools, lots of other tools are there, so you can take any. Now is it clear what you need to do in your task to do? Yes, ma'am. And ma'am, we have to make a report on these tools also? Yes, step by step. In report itself, we have two things. Okay, the 4 case studies plus 2 reverse engineering tools. When you combine this two, your report will be generated. Are you getting? When you combine this two, your report will be generated. So regarding task 1, we complete all the discussion. We will complete your task 2 by the next lab itself. एंड उसके बाद जैसे ही अगर आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो गया, देन यू कैन गिव, आपको मतलब टाइम स्पैन दे रही हूँ कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट लैब में से आप दे सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरी. अगर आपका रेडी नहीं है देन वी गो एट विद द डिस्कशन वन ऑन वन. ओके, कि आपको टूल्स का डेमो देना पड़ेगा, या बिकॉज दिस वन इज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, राइट? So we will go ahead with one-on-one case study discussion. We will go ahead with the one-on-one demo of your tools. Okay, so that way you need to just start preparing and just start preparing your report. Okay, now presentation में क्या करना है? Many students have doubts. Like report की format आपके पास है. I already uploaded in your Google Classroom. अब PPT कैसे बनाओगे? उसका कोई specific format नहीं है. But PPT में ये 4 केस स्टडीज प्लस ये आरई टूल का, अगर आप उसमें स्क्रीनशॉट अटैच करके समझाना चाहते हो दैट इज आल्सो फाइन, बट लाइव डेमो यू नीड टू गिव रिगार्डिंग टूल्स. ओके, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट. अगेन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको पीपीटी उस वे में बनानी है कि ताकि जो भी दूसरे लोग हैं उसको समझ में इजीली आ जाए. सो पुट सम इमेजेस. पैराग्राफ मत लिखना. ओके, पहले इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. पीपीटी में कभी पैराग्राफ नहीं होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट कॉपिंग इट एंड जस्ट पेस्टिंग द पैराग्राफ. पॉइंट टू पॉइंट वाइज ही होती है पीपीटी, उसको ही बोलता है पीपीटी. ओके, अदरवाइज रिपोर्ट में क्या होता है, आपका डिटेल वे होगा और पीपीटी में समराइज वे होगा पॉइंट वाइज विथ योर इमेजेस. के पहले ऐसा दिखता था, उस रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ, इट विल लुक लाइक दिस. Okay, so specifically for presentation, format is not there. You can go ahead with your choice, that is fine, which include all the 4 case studies discussion, and it is for your reference. कि किसी को direct image से explain करने में दिक्कत आ रही है, then put some points ताकि आप कुछ explain करने में भूल ना जाओ, right? So that way you can prepare the PPT. अगर PPT है उसके भी काफी tools होते हैं. अगर आपको explore करना है तो Prezi है, Latex है, and normal जो आप पावर पॉइंट में यूज कर रहे हो, then you can go for it. That's up to you. Okay, so basically in your next lab we will discuss all the 2 tasks, and then after we go ahead with one-on-one group wise discussion with you. मैम. Yes. मैम, आरई टूल्स में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, बट उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये रिवर्स इंजीनियर कैसे हुआ. मतलब आपको वो टूल है, उसमें ऐसा क्या है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा है, बिकॉज दीज आर द टूल्स स्पेसिफिकली फॉर द रिवर्स इंजीनियरिंग डोमेन. ओके, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, स्ट्रिंग्स,
सो ये क्या करता है, आपका जो कोड होता है उसको कोड को एनालाइज करेगा और उसके बेस पे आपको सारी स्ट्रिंग्स फेच करके देगा, राइट? सो दैट इज अप टू यू, बट इट शुड बी अप्लाई, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग डोमेन पे कहीं पे अप्लाई हुए हैं या फिर कैसे अप्लाई करते हैं, वो टूल्स का मैकेनिज्म कैसा है, दैट वे यू नीड टू एक्सप्लेन इट, अगर आप कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो तो। नो डियर, इन टास्क 2 आपको क्या करना है, रेडीमेड आपको फाइल्स मिल जाएंगी। जैसे कि आप डेमो देखोगे कोई भी टूल का, द फाइल यू ऑलरेडी गेट इट फ्रॉम गिटहब आल्सो, ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप you need to just follow the steps and explore that tool. That's it. You don't have to go for creating anything here or developing any APK. You will find everything. Like अगर आपको, I hope you know or not, जनरली कोई भी प्ले स्टोर में जाओगे, अगर कोई भी एप्लीकेशन है उसकी आपको APK फाइल चाहिए, then you can use this APK tool. You will get it and then after you can explore it. जनरली क्या होता है कि कोई भी कोड है, अगर आपके पास कोड आ गया, राइट, जनरली ये टूल्स होते हैं वो किसके लिए अप्लाई होते हैं? आई एम जस्ट राइटिंग दिस वन, आइदर क्रैकिंग योर सॉफ्टवेयर, आइदर हैकिंग पर्पस, और आइदर इम्प्रूवमेंट पर्पस, or for the analyzing your competitors code or the competitors product. Okay, so generally hacking और cracking के लिए, और कोई सॉफ्टवेयर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए ये सारे टूल्स यूज होते हैं। मेजोरिटी ऑफ दैट, all the application are based on this hacking and cracking. So उसके लिए आपको रेडीमेड फाइल चाहिए, बिकॉज अगर आप बनाने जाओगे इट्स विल टेक टू मच टाइम। yes, नॉट ओनली इंस्टॉलेशन, बिकॉज आपको रेडीमेड फाइल ही मिल जाएगी, तो आपने वो कोड पे ये टूल कैसे अप्लाई किया, और आई विल जस्ट शो यू वन डेमो। जस्ट एवरीबडी, जस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ लैपटॉप राइट नाउ? How many of you have a laptop? Make sure in next lab, come up with a laptop so that we can go ahead with the demo part. Okay. Now everybody, the students who have a laptop, anyone you have a laptop or not, tell me. Yes, ma'am. Okay. Any other students? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so students who have a laptop, और जिसके पास नहीं है वो एक बार डेमो देख लेना। ओके, जनरली क्या होता है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रैक करना है या फिर उसका पासवर्ड है वो चेंज करना है, या फिर जनरली क्या होता है कि क्रैक करना मतलब उसका लॉजिक है उसको मॉडिफाई करके उसमें एंट्री लेना। ओके, तो यहाँ पे अगर ये चीज आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल हैकिंग के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए ये टूल्स होते हैं। सो डोंट अप्लाई इट, डोंट गो अहेड विद द हैकिंग पार्ट। ओके, सो जनरली decompilers are there, debuggers are there, okay, assemblers are also there, and editors are also there. ओके, ये सारे टूल्स कंपलसरी ऐसे नहीं है। ये एक टूल है वो क्या करता है कि डीकम्पाइल करता है। जैसे कि आपके पास सिर्फ EXE फाइल है, ओके, जनरली रियल टाइम में ऐसे ही होगा कि आपको EXE फाइल बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट है, वो आप सिर्फ लिंक दोगे उसके बेस पे आपको EXE और APK फाइल मिल जाएगी आपको। बट उसके बाद क्या करना, उसमें कौन सा कोड है, हाउ यू विल अप्लाई। अगर आप कोड ही नहीं एनालाइज करोगे तो हाउ यू विल क्रैक इट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो फॉर दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टूल। ओके, कि आपके पास अगर EXE फाइल ही है तो काफी सारे ऐसे टूल्स है कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, आप कमांड के थ्रू भी उसको हैक कर सकते हो और रिट्राइव कर सकते हो इंफॉर्मेशन। आई होप, हैव यू लर्न द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट बिफोर? No, ma'am. ओके, जनरली क्या होता है कि अगर आप अटैक करते हो तो 2 टाइप्स के अटैक होते हैं। एक होता है एक्टिव अटैक्स और दूसरा होता है पैसिव अटैक्स। नाउ एक्टिव अटैक्स मींस अगर मेरे जीमेल या फिर मेरे व्हाट्सएप में अगर कुछ अटैक हुआ है, देन आई कैन इजीली ऑब्जर्व कि कुछ डेटा चेंज हो जाता है या फिर कुछ ऐसी
एक्टिविटीज होती है विच इज नॉट एज यूजुअल, पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत चलता है, बट आई कैन फिगर इट आउट इजीली। इसे कहते हैं एक्टिव एथिक्स। नाउ व्हाट इज अ पैसिव एथिक्स? पैसिव एथिक्स मींस आपकी पूरी सिस्टम है वो उसका एक्सेस किसी और के पास है, already it is hacked, but that person is not attacking to your information, it will only the observe your information। वो क्या करेगा? सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। जनरली ये क्या होता है पता है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, या फिर कोई भी और कंट्रीज है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन पे आपको डाउट है तो उसके सारे के सारे जो एक्टिविटीज होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कनेक्शन किसके साथ है, राइट? सो सेम वे ये नेटवर्क में भी ऐसा होता है कि इसका ट्रैफिक कौन से अदर नेटवर्क में जा रहा है, वो किस पर्सन के साथ कम्युनिकेट ज्यादा करता है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। और जब भी पैसिव अटैक होता है ना तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन चेंज ही नहीं हो रही। अगर इंफॉर्मेशन कुछ चेंज हो या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस आने लगे अचानक से तो आपको पता चलेगा ना, बट कुछ हो ही नहीं रहा, फिर भी दैट पर्सन इज एनालाइजिंग योर एंटायर इंफॉर्मेशन, सो दैट इज कॉल्ड द पैसिव अटैक। ओके, तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? सिर्फ इंफॉर्मेशन को फैच करते हैं, राइट? मैं सिनारियो देती हूँ हैकर्स के अप्रोचेस का, कि एक टाइप का अप्रोच होता है कि वो सारे के सारे डेटा फैच करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे और उसके में ही पूरा का पूरा आपको कोड होगा, वो कोड इज योर पासवर्ड। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मॉडिफाई ही करना पड़ता है, आपका जो फैच हुआ जो कंटेंट उसमें ही आपका पासवर्ड लिखा होता है, राइट? अब जब भी एप्लीकेशंस बनती है हायर लेवल पे तो इतनी इजीली नहीं होती है, बट एज अ डेमो पर्पस वी गो एट। जनरली क्या होता है, लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी के, कि लेयर 1 हुआ, आपने वो क्रैक किया, देन लेयर 2 आएगा, लेयर 3 आएगा, सो लाइक दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर देयर। ओके, एंड फॉर ईच एंड एवरी लेयर्स यू कैन यूज द डिफरेंट टूल्स, क्योंकि अगर मैं आज फर्स्ट लेयर को क्रैक करने के लिए स्ट्रिंग्स टूल यूज कर रही हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंड लेयर में वही टूल अप्लाई होगा। Based on your security, you need to apply the different tools also. So जब भी hackers या कोई attacker होता है वो attack करता है तो एक tool sufficient नहीं होता है, काफी ऐसे tools है जो आपको मतलब paid version में भी मिलेंगे, that is used to crack higher security application or the software, but we will use only the freewares for our demonstration purpose. So, अगर आपके पास exe फाइल है तो उसके लिए उसको पहले तो ओपन करना पड़ेगा, राइट? ओपन करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल एनालाइज द लॉजिक। ओके, जैसे कि काफी ऐसी वेबसाइट होती है, हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा एक्चुअल में लॉगिन जब वाला लॉजिक होता है वो क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी कि आपका जब लॉगिन वाला लॉजिक है वो क्या है कोई भी वेबसाइट में? वो कैसे अप्रूव होके होम पेज में रीडायरेक्ट करेगा? उसकी ट्रू कंडीशन क्या होगी? टेल मी, हैव यू क्रिएटेड द वेबसाइट, देन यू हैव आइडिया अबाउट इट कि आप लॉगिन पेज जब बनाते हो तो उसका लॉजिक क्या होता है, इसकी फंक्शंस होती है, उसमें आप क्या लॉजिक पुट करते हो? It will take the data from database. If it will correct, then yes, very good, very good. ओके, तो जनरली क्या होता है, हमारा लॉजिक ये होता है कि जो भी इनपुट किया डेटा इज डबल इक्वल्स टू विद द डेटा फेच फ्रॉम योर डेटाबेस। ओके, अगर ये मैच हुआ देन इट विल गो अहेड विद द रीडायरेक्शन टू द होम पेज। अब अटैकर, अगर आपको इसमें अटैक करना है तो आप क्या करोगे? तो अगर डेटा, जनरली क्या होता है कि हैकर्स है वो अटैक डेटाबेस पे भी कर सकता है और आपकी वेबसाइट पे भी कर सकता है। अगर डेटाबेस पे करे तो उसको तो सारा पासवर्ड मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पे बहुत इजीली हैक करनी है सिस्टम तो वो क्या करेगा, कंडीशन चेंज कर देगा। वो सिर्फ डबल इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल्स टू पुट कर देगा, तो कंडीशन क्या हो गई कि इनपुट किया गया डेटा एंड फेच किया गया डेटा अगर इक्वल्स टू नहीं है देन इट विल गो टू द एंटायर होम पेज। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। होम पेज पे नहीं होता है बट एक्चुअल सिस्टम में एंट्री हो जाती है। सो बाय चेंजिंग अ वेरी लिटिल कोड यू कैन जस्ट एंटर टू द सिस्टम।
बट ये टाइप की एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जहाँ पे लाइक नॉन आईटी पीपल्स है जिसको बहुत ज्यादा पता नहीं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए या फिर उसके लॉजिक्स में बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने लिखा है, राइट? सो इन दैट केस यू कैन इजीली हैक इट. Otherwise, if you go ahead with the popular companies, then this kind of mechanism is not there because layers of securities are provided. Okay, so regarding reverse engineering tools, this is the introduction part. We will do the demo of all the different tools in the next lab itself. Only one lab is sufficient to go ahead with that. Okay, so is there any doubt in today's session regarding your task 1? Start preparing your task 1. No, ma'am. Any other student? Devang, Ravi? Ma'am, Yes, Ayush? ma'am, in our presentation, we have to put a demo clip of the task 2 in which we show and explain how that tool works, whatever hacking software it is. Like that, we have to present the demo clips, right? Like it's not compulsory. You can just share your entire screen and you can give the demo. Likewise, I'm sharing the screen and showing the entire demo. That's fine. You don't have to just prepare the entire clip and put it into the presentation. It's fine. You don't put it anything regarding RE tools. Directly, you can just show me the demo. Okay, that's fine. Okay, ma'am. So repetitive task will not be there because I need to show the demo. That's right. Okay, any doubts? So here we complete your task 1. Now you need to start preparing for that. If you have any confusion regarding any case study title, then you can contact me, fine. And make sure when we meet into the next lab, all the students compulsory, you need to just write your data in your sheet as well as all the 4 title you need to write there. Okay, so I'm just taking the attendance. Okay. One, $90. I'm 89 present. Okay, Neil. Ma'am, your voice is not audible. Hello, ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, your voice is cutting. Now it's coming. Yes, ma'am. Just wait. Okay. Hello. Now it's coming properly or not? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, thank you, students. So I'm taking attendance again because lots of students are absent due to my bad network. Okay, 41 Anurag is absent, 89 Mihir is present, 90 Harsh. Present, ma'am. Okay. Then after 91 Sanskar, Yes, ma'am. 92 Savan, Yes, ma'am. 93. Yes, ma'am. Okay. 95 Krunal. present, ma'am. Okay. 99 Mukund. Yes, ma'am.
100 Madhvi. 101 Ayush. Yes, ma'am. 101 present. Okay, 102 Shruti. Yes, ma'am. Present. Okay, 105 Drashti. Present, ma'am. Okay, 106 Harsh. Not that Harsh. 150 Mahek. Yes, ma'am. 55 Shantosh. Shantosh is not there. Okay, 92 series 11 Ravi. Present, ma'am. 13 Nirali. Nirali is not there. 15 Dhruvin. Yes, ma'am. Okay, 16 Vishwa. Vishwa is not there. 17 Geet. Present, ma'am. Okay, 18 Dinesh. Present, ma'am. 19 Nivya. Present, ma'am. 20 Pearl. Present, ma'am. 21 Devang. Present, ma'am. 22 Shakshi. Present, ma'am. 24 Udayraj. Yes, ma'am. 25 Shubham. Present, ma'am. Okay, anyone remaining for the attendance? Okay, thank you, students. Have a nice day. You can leave the meet. Hello, ma'am. Yes, Mahek. મેમ આપણે જે લિનક્સમાં જે આપણે જે રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ ના ટૂલ આવે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? કરી શકો બટ એ ટોટલી ડિફરન્ટ હશે કેમ કે આ બધા ટૂલ્સ છે ને વિન્ડોઝના છે લિનક્સ અને મેકમાં અલગ હશે તો તમે એક્સપ્લોર કરી શકો છો બેઝડ ઓન યોર સિસ્ટમ. એટલે આપણે જે કાલી લિનક્સમાં આપણે ક્લેન ને ક્લેન પ્લસ પ્લસ ને જે આવે એ યુઝ કરી શકીએ આપણે આમાં રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ માટે? કરી શકો બટ એ ટૂલ્સમાં એક્સપ્લોરેશનમાં જોવું પડશે કે એનું મિકેનિઝમ કેવું છે એ કેવી રીતના મતલબ મેં તમને કીધું ને સ્ટ્રિંગ્સ કેવું કરે છે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને આખો કોડને એનાલિસિસ કરે છે રાઈટ તો એ જે ટૂલ છે એનું મિકેનિઝમ કેવું છે એ કેવી રીતના રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ અપ્લાય કરે છે એમ એ જોવું પડશે. ઓકે ઓકે મેમ. થેન્ક યુ મેમ. Okay, Mike. All other students you can leave.